industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. कृषि क्षेत्र के लिए भी डिजिटल बजट में काफी कुछ दिया गया है। इसे एग्रीकल्चर का बजट कहा जा रहा है। एमएसपी में भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को बड़ी सौगात, खास तौर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। Will be directly agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD
This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Agriculture. कृषि क्षेत्र के साथ साथ डिजिटल बैंकिंग को भी भारत सरकार की तरफ से महत्ता दी गई है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में खास तौर से डिजिटल करेंसी को लेकर आज इस बजट में विशेष घोषणाएं की गई है। Benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country. बैंकिंग से हर किसी को जोड़ने के लिए एक तरफ डिजिटल बैंकिंग को, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया गया और इसीलिए अब हाई लेवल एजुकेशन के लिए भी डिजिटल यूनिवर्सिटी का खाका भी इस बजट में रखा गया है। Content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students. खासतौर से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तमाम निजी सेक्टर में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा क्या माहौल दिया जाए, इस बात का ध्यान भी बजट में रखा गया है। Now move to the fourth priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries
and MSMEs services from professionals and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. तो आर्थिक क्षेत्र में निवेश से माहौल अच्छा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो वित्त मंत्री ने की साथ ही साथ जीडीपी के स्तर पर भी देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जहां 7.3% जीडीपी थी, वहीं इसके बाद परिस्थिति में सुधार होता है। 8 to 8.5 का लक्ष्य रखा गया है और निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनएसओ की तरफ से जो 9.2 का आंकड़ा दिया गया था, जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है इकोनॉमी की, उसे आज के बजट के माध्यम से 9.2 तक करने का लक्ष्य भी बजट में निर्धारित किया गया है। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. Honorable Speaker. तो लार्ज इकोनॉमी के लिए जीडीपी ग्रोथ के लिए एक नई परिपाटी बजट के माध्यम से सामने रखी गई है। खासतौर से अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा और इसीलिए इस बार भी इस हरित क्रांति के लिए कृषि क्षेत्र के लिए खासतौर से ग्रीन बाउंड का भी जिक्र उन्होंने किया। Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects, which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the gift city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA
to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Green. एक तरफ कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में कई प्रावधान, दूसरी तरफ आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं में से एक पानी बिना सब कुछ सून, और इसीलिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना, इस योजना को भी तरजीह देते हुए, प्राथमिकता देते हुए बजट में 8.7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. न केवल हर घर नल योजना का ध्यान रखा गया, बल्कि देश की मजबूती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके देश की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक सेहत को मजबूत करने की कोशिश, और इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसका खाका भी आज बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने सामने रख दिया है। Charging infrastructure and grid-scale battery systems will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती में खासतौर से अगर बात की जाए, स्टार्टअप का भी जिक्र वित्त मंत्री ने किया, और स्टार्टअप को और ज्यादा मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन सबके बीच एक और बहुत खास बात कही गई, रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। डिजिटाइजेशन लगातार हमने देखा है कि कोरोना काल में बढ़ा, और इसी कड़ी में आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी को भी सामने रखने की बात इस बजट में कही गई है। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. एक तरफ आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा, तो दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब जो खास तौर से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही थी, उसे रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर आज टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है। 30% टैक्स देना होगा जो भी क्रिप्टो करेंसी कंज्यूमर्स होंगे, और इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को सरकार रेगुलाइज्ड करने के पूरे मूड में है। इसका खाका भी बजट में आज प्रस्तुत कर दिया गया है। I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand, we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued.
Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And स्वास्थ्य की दिशा में भी वित्त मंत्री ने आज अपने इस डिजिटल पिटारे से बहुत कुछ खास कहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल एक्सपेंडिचर्स बढ़े थे कोरोना काल में, और ये सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि देश स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, और इसीलिए मानसिक स्थिति को किस तरीके से स्वस्थ रखना है इसके लिए भी आज विशेष प्रावधान का जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 20. इसके साथ साथ निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत सारी आशाएं थी। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत हद तक इस बजट में कई प्रावधानों का जिक्र किया गया है। खासतौर से 40% की आबादी कही जाती है मध्यम वर्गीय जो वर्ग है वो 40% लगभग माना जाता है, और ऐसे में वित्त मंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो वर्ग है उसे डीबीटी का डायरेक्ट फायदा हो रहा है। Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfer for the middle classes. Since 2000. कोरोना काल में हमने देखा कि सबसे ज्यादा नुकसान एमएसएमई सेक्टर को हुआ। कई छोटे उद्योग बंद हुए और उन छोटे उद्योगों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है, और इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इस बजट में 2 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसका सीधा असर उन छोटे व्यापारियों को, उन छोटे उद्योग कर्मियों को होगा जो एमएसएमई के जरिए अपना नया स्टार्टअप भी कर रहे हैं। The additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGTMSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand. इस पूरे बजट में अगर क्षेत्रीय हिसाब से देखिए तो उसको लेकर भी विकास को लेकर, क्षेत्रीय विकास को लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया। खासतौर से पहाड़ों पर किस तरह से विकास हो। पहाड़ों में कई ऐसे सुदूरगामी गांव हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, जहां पे सड़कों की जरूरत थी, जहां पर पूरी तरह से पर्वतमाला श्रृंखला की शुरुआत करने की भी बात कही गई है। विकास से जोड़ने के लिए, इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों को भी एक विशेष प्रोत्साहन आज के बजट के माध्यम से देने की सरकार की बड़ी कोशिश है। A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, वित्त मंत्री ने इस पूरे बजट के दौरान ओमिक्रॉन और कोरोना से उपजे हुए हालात का भी जिक्र किया और बताया कि सोशल एक्सपेंडिचर, खासतौर से अब देश की जनता की सेहत के लिए जो व्यय किया गया वो पहली प्राथमिकता थी और इसीलिए तेजी के साथ काम भी बढ़ा। सरकार ने ओमिक्रॉन कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया और ये वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्राइव के तौर पर जाना जा रहा है।
I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong. इसके साथ ही साथ इस बजट में एक बड़ा विशेष प्रावधान रखा गया, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। आज भी आपने देखा है कि पोस्ट ऑफिस के जरिए खाता खोला जाता है, लेकिन कोर बैंकिंग का पोस्टल ऑफिस अभी हिस्सा नहीं है। लेकिन इस बजट में आज क्लियर कर दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस को भी कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा और इसका सीधा फायदा उन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को होगा जो पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंक से जुड़ने की कवायद करते हैं। In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. और इसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की। जीएसटी को लेकर जो प्रावधान पहले किए गए थे, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जिस तरह से जीएसटी को क्लियर आउट किया गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, इसी तरह जो दूसरी सेवाएं हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ही सिंगल विंडो सिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए और पुशअप देने के लिए भी इस बजट में वित्त मंत्री ने विशेष प्रावधानों का जिक्र किया है। A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It'll enable application for all 4 approvals through a single. और इसी के साथ साथ देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम की तो बात की, लेकिन इसके अलावा सोलर एनर्जी को लेकर लगातार सरकार कई योजनाएं खड़ी कर रही है, कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी इस बजट में 9,500 करोड़ का प्रावधान है। Solar power to facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production linked incentive for manufacturing of high efficiency modules with तो हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल को लाने के लिए सोलर एनर्जी पावर को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान। इसके साथ साथ क्योंकि युवा भारत है और युवा भारत शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन हो, और इसीलिए इस बजट में खास तौर से पीएमई विद्यालय का जिक्र भी किया गया है। To the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in
सप्लीमेंट्री एजुकेशन सब तक पहुंचे, इसके लिए वन क्लास वन टीवी प्रोग्राम की शुरुआत करने का प्रावधान, जितनी भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं में तमाम शैक्षणिक कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया से कनेक्ट होना है बच्चे को, इसलिए जरूरत क्या है, टेक्नोलॉजी और हाई हो, इसलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया गया और 5G कहा गया है इस बजट में कि इस साल से 5G की शुरुआत भी हो जाएगी। 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation. तो इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी का ध्यान रखा गया और इसी श्रेणी में महिला और बाल विकास के लिए भी कई विशेष यहाँ पर सुविधाएं बजट में देखने को मिली है। कुछ खास पैकेजेस का जिक्र भी वित्त मंत्री ने महिला और बाल विकास की श्रेणी में किया है। Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. किसी भी देश की प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां पर विकास दूर दूर तक कैसे और किस माध्यम से पहुंच रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से हमारे यहाँ रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक महत्वपूर्ण खाका खींच रहा है। और इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना में रोडवेज, हाईवेज को किस तरह से और बढ़ाया जाए मजबूती के साथ, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी इसका भी बड़ा प्रावधान इस बजट के माध्यम से आज देने और रखने की कोशिश की गई है। Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. इसके साथ ही साथ क्योंकि कोरोना काल में कई उद्योगों को बड़ा झटका लगा और इसीलिए उद्योगों को एक बार फिर से बूस्टअप करने के लिए कई बातों का जिक्र आज बजट में देखने को मिला है। खासतौर से आपातकालीन क्रेडिट लाइन की बात कही गई कि अगर उद्योग किसी भी तरीके का ऋण लेते हैं तो उनके पास उस ऋण को वापस करने के लिए एक बड़ी क्रेडिट लाइन होगी और उस समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। तो खासतौर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण बात आज के बजट में देखने को मिली। Especially those by micro and small enterprises are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. किसी भी समाज की मजबूती के लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है। समाज शिक्षित होता है तो देश भी मजबूत होता है और इसीलिए देश को शिक्षित करना है, देशवासियों को, बच्चों को शिक्षित करना है। इसलिए नई शिक्षा नीति भी लाई गई, लेकिन इस अब नई शिक्षा नीति को डिजिटल इंडिया से कैसे जोड़ा जाना है, इसके लिए भी नए तरीके से डिजिटल कंटेंट तैयार करने की बात इस बजट में स्पष्टतः कह दी गई है।
content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. हर क्षेत्र के साथ साथ कानून के क्षेत्र में भी आज महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे पुराने कानून हैं जिसमें रिफॉर्म की बात लगातार कही जा रही थी, लॉ रिफॉर्म की बात बार बार कही जा रही थी और इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र का भी ध्यान रखा और 1000 से ज्यादा ऐसे पुराने कानून हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. इधर जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए ई पासपोर्ट सुविधा की नींव भी आज इस बजट के माध्यम से रख दी गई है। E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान के लिए भी आज अर्बन प्लानिंग को एक आधार दिया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुछ खास प्रावधान बजट में किए गए। Of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. और इसके साथ साथ एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात भी वित्त मंत्री ने इस बजट में की है। AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. सरकार जब से आई है तब से आर्टिफिशियल जब टेन्योर सरकार का शुरू हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निश्चित रूप से उसे महत्व प्रदान किया जा रहा है और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भी इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान देखने को मिले। Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. तो कुल मिलाकर विशेषज्ञों की नजर में ये देश की आर्थिक सेहत सुधारने वाला बजट है। देश की आर्थिक सेहत सुधारने का मतलब सीधा सीधा है कि आम आदमी
की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे दूरगामी बजट कहा जा रहा है, जिसका फायदा निरंतर और सतत होगा। अभी हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।